Welcome to my all dear students. This is Siddharth Sakhar Malik, lecturer in Applied Electronics and Instrumentation Engineering at Bose Kotak. I teach the subject Industrial Measurement and Instrumentation Part 1 of 4th semester. So today is my topic is electrical temperature instrument. So this is the part of this subject. Okay. So first go to the next slide. The contents are introduction, electrical temperature instrument, RTD, Thermistor and Thermocouple. So first is introduction. So first of all we have to know that what is temperature measurement. So temperature is a most fundamental parameter of our life. It is used to measure or control the industrial variable. Okay. So the temperature of a substance is used to measure the hot body or cold body of a substance. Okay. So it is also the thermal body. It is the thermal state of a body or a substance which is determined. We'll have to whether it will give heat or receive heat from the other body. So this is the temperature measurement. टेम्परेचर मेजरमेंट कहया गले हमर बॉडी टेम्परेचर केते कोन अछि, एनवायरनमेंट टेम्परेचर केते कोन अछि, ताकू हमें मेजरमेंट करिया पे जो इंस्ट्रूमेंट गुरा दरकार होछि सेटा को स्टार भितरु गोटे होछि इलेक्ट्रिकल टाइप टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ओके. नेक्स्ट होछि सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल टाइप टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सो इलेक्ट्रिकल टाइप टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली गोटे कोन ना इट इज द वन टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर. तो तुम समस्त जानते हो, ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज ट्रांसड्यूसर. तो ट्रांसड्यूसर मीन्स इट कन्वर्ट द वन टाइप ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो also electrical type temperature instrument is a one type of transducer. So it convert the thermal energy to electrical energy. So how it is generate the electrical energy? Now by using Western bridge. Okay. So this is the electrical type temperature measuring instruments. So next is RTD. So RTD means resistance temperature detector. So RTD means resistance temperature detector. So RTD is a positive temperature coefficient. Positive temperature coefficient means the temperature is directly proportional to the resistance. केमिति ना देखियो ना एठी हमर कोन हेची ए जो RTD गोटे RTD सेंसर ये कोन हेची ना मेटल शीट लागिची. देन एठी तार इन्सुलेटिंग फॉर्मर ऊपरे इची कॉइल गुरा कोन ना वाइंडिंग हेकी अछि. एठी दीटा लीड वायर लागिची जो लीड रे हम कोन मेजर करि परिया रेजिस्टेंस. अच्छा जेतबले एठी कोन ना मेटल शीटटा जेतबले एठी हीट एब्जॉर्ब करिवो बा हीट करिवो, मेटल शीटटा जेतबले हीटेड हे जिवो सेतबले कोन हे जिवो ना एठी कोन हे जिवो ना ए जो वायर रो कोन हे जिवो ना लेंथ चेंज हे जिवो. सो लेंथ कोन पे चेंज होला ना ड्यू टू द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज लॉ ऑफ रेजिस्टेंस? सो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इज R is equal to rho L by A. Okay. So rho होची कोन resistivity of OA. So length L होची length of the conductor and A होची area of the cross sectional area of conductor. Okay. So एठी कोन हला ना रेजिस्टेंस ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन हला लेंथ हला. ओके. सो डायरेक्ट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हला. सो एठी हमर कोन हला ना जेतो एठी टेंपरेचर जेतोले when the metal sheet is heated then also increasing length in the wire. The length is when the increasing in length of the wire also resistance of the wire also increases. तो सेहिति पई एठी लेंथ ऑफ द वायर जदी इंक्रीज हला सेहिति पई रेजिस्टेंस ऑफ द इंक्रीज हला. तो लेंथ केमिति इंक्रीज हला ना टेंपरेचर इंक्रीज हला बोली. सो टेंपरेचर इंक्रीज हला बोली लेंथ का भी इंक्रीज हला.
then length increase hela mane resistance increase hela. So also we get the result, the temperature is directly proportional to the resistance. So this is called PTC type. So RTD is called PTC type sensor. So this is the formula. RT is equal to R0 into 1 plus alpha 0 into T. So RT is the resistance of the RTD. RT T is equal to T0 माने RT होची कोन ना जो हमें जो सब्सटेंस रो हमें रेजिस्टेंस टा मेजर करिबा. R0 होची ना रेजिस्टेंस ऑफ RTD एट 0 डिग्री सेल्सियस रे RTD रो केते टेंपरेचर होची केते रेजिस्टेंस होची. अल्फा 0 होची टेंपरेचर रेजिस्टेंस टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस हैला. So normally RTD रो normally हमें कोन मटेरियल यूज करछे को मेटल यूज होची normally platinum निकेल और कॉपर आलोय हैला. platinum normally हमर कोन ना platinum हमर RTD रे normally यूज होची. अच्छा हमें तो we get the output of resistance हमें पहले. So how we get the output of electrical output? So we study the आमे पढुछे कोन इलेक्ट्रिकल टाइप टेंपरेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सो इलेक्ट्रिकल आउटपुट दरकार तेनो इलेक्ट्रिकल आउटपुट केमिति पाइबा ना ड्यू टू द वेस्टर्न ब्रिज. एटा होची हमर वेस्टर्न ब्रिज. सो एथि कोन ना वेस्टर्न ब्रिज कोन ना तार चारटा रेजिस्टेंस होची. तो चारटा रेजिस्टेंस जेतोळे चारटा रेजिस्टेंस होची एथि कोन पावर सप्लाई दिया होची. तो एथि कोन ओडा एमीटर लगाय छै हला. सो केमिति ना जे वेस्टर्न ब्रिज रो कैरेक्टरिस्टिक्स होची ना जेतोळे ऑल द रेजिस्टेंस जेतोळे R1 into R4 is equal to R3 into R4 इक्वल हेले सेतोळे वेस्टर्न ब्रिज ता कोन हो बैलेंस हो. सेते बैलेंस हेले माने एठी करंट ता कोन हो जीरो आसबो. एटा होची वेस्टर्न ब्रिज रो कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आमे एठी कोन करना ना गोटे आर्म रो रेजिस्टेंस गोटे आर्म रे एठी कोन ना RTD लगेले. एटा होची RTD लगेले कोडी ना गोटे आर्म रे RTD हम लगेले. अच्छा जेतोळे आटे इनिशियल कंडीशन कोन जेतोळे टेंपरेचर एटी RTD रो टेंपरेचर जेतोळे 0 अछि सेतोळे कोन ना ब्रिज ता पूरा कोन बैलेंस कंडीशन रो अछि. तो बैलेंस कंडीशन अछि माने एटी आउटपुट करंट और वोल्टेज कोन 0 आसीबो. सेम देन जेंति when the RTD sense the temperature, then temperature is also increases. When temperature increases the resistance also increases. The resistance also increases, then also bridge also on balance. So when the bridge is also on balance, when we get the electrical output by the voltmeter or ammeter. So this is the way to get the electrical output by the RTD. So we use the platinum in RTD use the platinum in laboratory and industrial application. So we know that PT100. So PT100 is a what? PT for platinum, and 100 is RTD at 0 degree. It detect the 100 of resistance. So this is called PT100 RTD. Okay. So this PT RTD only used for laboratory application or any industrial applications. So the RTD temperature range is minus 200 degree Celsius to 650 degree Celsius. Okay. So next is thermistor. So thermistor is a normally semiconductor or metal oxide material. Okay. So thermistor is two types. One is NTC and PTC. So NTC is a negative temperature coefficient. So negative temperature coefficient means it is temperature is inversely proportional to the resistance. So this is NTC. NTC means negative temperature coefficient. Okay, NTC is negative temperature coefficient. When the thermistor temperature is increases, then resistance of the thermistor decreases. So this is called NTC type. Okay, and also we know that PTC. What is PTC? Also I explained that the temperature is directly proportional to the resistance. So this is called PTC type. But ଆମର thermistor कोन ना NTC type टा ही maximally यूज होची. NTC type normally because of semiconductor material. Okay. Then our temperature range होची
-70 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एठी हमें कोन टेंपरेचर इंक्रीज होला बोली रेजिस्टेंस सा डिक्रीज होला तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होला। अच्छा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होला बोली तारो इक्वेशन आसिला कोन ना RT = R0 into e to the power beta into 1/t minus 1/t0। सो RT होची ना जो सब्सटेंस रा हमरो रेजिस्टेंस था at t केल्विन आको हमें केल्विन रे मेजर करबा। देन R0 is resistance at temperature 0 Kelvin। Then T0 is the reference temperature. We take the reference temperature 25 degree Celsius and beta is the constant or also temperature coefficient. Okay. So normally this is the thermistor like disc type. This is the construction wise thermistor. Also we can see the disc type also, rod type, washer type and beads type. This is the thermistor construction wise. Okay, so how we will get the electrical output? By same here we also use the Western bridge method. So this is the 4 resistance and in wire arm we connect the thermistor। आमे एठी कोन गोटे आर्म रे ताकू thermistor यूज करछे। एठी सप्लाई दिया आछि डीसी सप्लाई दिया आछि। अच्छा जेतबेला थर्मिस्टर टेम्परेचर कोन हबो 0 डिग्री थिबो सेतबेला कोन हबो ब्रिज ए रेजिस्टेंस सब जगह रेजिस्टेंस कोन हबो सेम रहिथिबो। सेम रहला माने ब्रिज ता कोन बैलेंस रहिथिबो तो बैलेंस रहला माने एठी आउटपुट वोल्टेज कोन आसीबो 0 आसीबो। नो डिटेक्शन ऑफ करंट और वोल्टेज हला। सो व्हेन थर्मिस्टर सेंस द टेम्परेचर, थर्मिस्टर टेम्परेचर जदी इंक्रीज हला, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इंक्रीजेस the resistance of this thermistor also decreases। So decreasing resistance, here is the bridge is on balance। When the bridge is on balance, then the output voltage we get the output voltage or current। So we get the electrical output in this way by using the Western bridge method। So this is the mainly semiconductor material au amar kono metal oxide material। So eta hoji kon na एटा कोन एक्सपोनेंशियल आछि त आरो कैरेक्टरिस्टिक्स होई एक्सपोनेंशियली हबो हला। नेक्स्ट होची थर्मोकपल। सो थर्मोकपल होची इट इज ए कपलिंग ऑफ टू dissimilar metal welded each other to form a two junction। okay, once again कहूची it is the coupling of two dissimilar metal connected welded each other to form a two junction। One junction is cold junction, another is hot junction। When hot junction is heated, the temperature of the hot junction is increases when the EMF is generated at the two junction due to the thermoelectric effect। So what do you mean by thermoelectric effect? Now thermoelectric effect, it is the thermoelectric effect is converted to thermal energy to electrical energy। So this is called thermoelectric effect। So we get the EMF due to the thermoelectric effect। So look at this diagram। So this is the two dissimilar metal, this is two dissimilar metal welded each other and make a two junction। One is hot junction or is cold junction। Also we can call as hot junction as a measuring junction and also we can cold junction also we call as reference junction। okay, so when the heat is applied to the hot junction, then the EMF is generated in the two junction due to the thermoelectric effect। so जो EMF टा generate हबो सेटा कोन ना small amount of voltage। सो सेही जो वोल्टेज टा हमें केमिति डिटेक्ट करबा ना ए वोल्टमीटर द्वारा। सो हमें वी कैन जनरेट द ईएमएफ वोल्टेज सो और वी कैन मेजर द ईएमएफ वोल्टेज ड्यू टू द वोल्टमीटर। सो इन टर्म्स ऑफ केते आसीबो ना इन टर्म्स ऑफ सेटा मिली वोल्ट रे आसीबो। इन टर्म्स ऑफ मिली वोल्ट रे आसीबो कोडा ना ए थर्मोकपल रो आउटपुट टा। सो चलो एठी कोन डायरेक्टली हमें कोन इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करले तो एठी किछि ब्रिज दरकार पइलानी। सुनो एटा को थर्मोकपल टा को हमें कोन कहले ना गोटे एक्टिव ट्रांसड्यूसर। सो एक्टिव ट्रांसड्यूसर माने कोन व्हिच कन्वर्ट द वन टाइप ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एठी कोन हल ना डायरेक्ट हमें थर्मल एनर्जी टू कन्वर्ट करले कोडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। सो दिस इज कॉल्ड थर्मोकपल हला। सो थर्मोकपल इज ए एक्टिव ट्रांसड्यूसर।
ओके सो आमे डिसिमिलर मेटल नेथिले सो वी कैन टेक एज टू मेटल आयरन एंड कांस्टेंटन हला आयरन एंड कांस्टेंटन एटा होची हॉट जंक्शन तापर एठी कोल्ड जंक्शन को कले ना आपको हमें आइस वाटर रे डिप कर रखी हला एपटर हमरा वोल्टमीटर लागे जेतबेले एठी टेम्परेचर एठी कोन धर एठी 100 डिग्री सेल्सियस अछि एठी कोन अछि 0 डिग्री सेल्सियस अछि तो एठी टेम्परेचर डिफरेंस हला माने सेठी कोन हला ना आदरे ईएमएफ जनरेट हला ईएमएफ जनरेट हला केमती ना ड्यू टू द थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सो जो थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हला ताकू कोन कहंती ना सीबैक इफेक्ट तो आकू आल्सो कोन कहंती सीबैक इफेक्ट मैन ड्यू टू द thermoelectric of different temperature due to the thermoelectric effect the EMF is generated due to the thermoelectric effect so this is called Seebeck effect okay so this is already explained so this is the thermocouple material thermocouple so kon so material so use hochi hela so thermocouple gote hochi T type होची कॉपर कांस्टेंटन होची -180 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस हला ई टाइप में होची क्रोमेल कांस्टेंटन होची -50 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस हला आ जे टाइप होची आयरन वर्सेस कांस्टेंटन होची -180 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस आ के टाइप होची क्रोमेल एल्यूमेल देन क्रोमेल एल्यूमेल होची क्रोमेल आ एल्यूमेल होची क्रोमेल और एल्यूमेल हला तार टेम्परेचर रेंज होची -180 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस एस टाइप थर्मोकपल होची प्लैटिनम वर्सेस प्लैटिनम एंड 10% अप टू 2800 सो आर टेम्परेचर रेंज होची -15 डिग्री टू 1650 डिग्री सेल्सियस सो थर्मोकपल रो मैक्सिमम रेंज होची 2800 डिग्री सेल्सियस माने थर्मोकपल रो हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज होची केते ना 2800 डिग्री सेल्सियस सो नॉर्मली एठी आमे नॉर्मली जे टाइप और के टाइप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रे नॉर्मली हमर यूज होची हला जे टाइप और के टाइप अच्छा आमे केमिति जानिबा लैबोरेटरी रे कोटा आरटीडी कोटा थर्मिस्टर और कोटा थर्मोकपल अच्छा जो थर्मिस्टर रो जदी आरटीडी रो जदी दीटा जो लीड भारतिबो से लीड रो जदी हमें मल्टीमीटर चेक करबा जदी थर्मिस्टर जदी टेम्परेचर इंक्रीज कला हला मल्टीमीटर डिटेक्ट कला कोन टेम्परेचर जदी इंक्रीज कला रेजिस्टेंस इंक्रीज कला तो जदी भी सेमिति भी जदी हमें देखि परिबा माने नॉर्मल टेम्परेचर सेमिति आरटीडी कोड नबो नॉर्मल टेम्परेचर देखिबो जेतोल हमें मल्टीमीटर देखिबा मल्टीमीटर तादे लीड रे जेतोल कनेक्ट करबा सेतोल कोन करबा रेजिस्टेंस देखिबो जदी रेजिस्टेंस देखेला सेटा कोन हबो ना आरटीडी बोली अच्छा जदी हमर रेजिस्टेंस जदी हमर टेम्परेचर थाई कि जदी हमर रेजिस्टेंस पूरा लो देखेला सेटा हबो कोन ना हमर थर्मिस्टर हला आ जदी थर्मोकपल केन जानिबा ना एट नॉर्मल टेम्परेचर रे जदी हमर से जो थर्मोकपल लीड सहित जदी हम मल्टीमीटर कनेक्ट करबा जेतोल जदी वोल्टेज डिटेक्ट करबो इन टर्म्स ऑफ मिली वोल्ट दिस इज जानि पारे जे एटा होची थर्मोकपल सो आरटीडी थर्मिस्टर और थर्मोकपल जानि परिबो जे आमी कोटा माने सेम टाइप रो कंस्ट्रक्शन वाइज सेम टाइप रो सब सेंसर गुडा तुनु आमे मल्टीमीटर द्वारा चेक कर परिबा कि कोटा थर्मिस्टर कोटा थर्मोकपल आ कोटा आरटीडी बोल हैला सो देन होची कैरेक्टरिस्टिक्स होची आरटीडी थर्मिस्टर एंड थर्मोकपल देखो एटी आरटीडी होची एटी कोन अछि ना प्लैटिनम तो प्लैटिनम नॉर्मली हमर हाईली यूज होची तो प्लैटिनम रो कैरेक्टरिस्टिक्स होची पूरा लिनियर सो आमे प्रीवियस स्लाइड रे देखिले एटी आरटीडी रो एटी कोन हला ना आरटीटा ए जो आरटीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन ए जो टी की नहीं सो सेट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैला बोली सेट पे कोन हला ना कैरेक्टरिस्टिक्स कोन आसला लिनियर आसला हैला तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्वटा गाकी कोन आरटीडी रो लिनियर आसला तो आरटीडी रो बिहेवियर होची लिनियर हैला आरटीडी रो बिहेवियर होची लिनियर देन आसला थर्मिस्टर सो थर्मिस्टर रो कोन ना एटी एक्सपोनेंशियल कर्व आसची ड्यू टू द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट सो एटी ना कोन पई ना एठी मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर मेटल यूज होला तो सेहित पई कोन आसला ना एठी हमर एक्सपोनेंशियल कर्व आसला सेहित पई एई जो इक्वेशन अनुसार हमर जे जो इक्वेशन अनुसार ए जो फार्मूला अनुसार एठी एक्सपोनेंशियल टर्म यूज होची तो सेहित पई एठी कोन आसला ना हमर से कर्वटा कोन आसला एक्सपोनेंशियल कर्व आसला हैला देन आसला
थर्मोकपल सो थर्मोकपल से थर्मोकपल भी से एठी कोन ना थर्मिस्टर कोन आसला ना एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक आसला और थर्मोकपल रो फार्मूला होची E a² del T हला थर्मोकपल फार्मूला होची E a² del T ए होची थर्मोकपल कांस्टेंट हला एटा होची टेंपरेचर डिफरेंशियल टेंपरेचर सो एठी कोन ना कांस्टेंट हमर इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर आसला माने एठी कोन हला स्क्वायर हला माने एठी कर्व भी कोन आसला नॉन लीनियर हला सो तेणु छेटी काय तमे तेणु थर्मोकपलटा कोन आसला नॉन लीनियर हला थर्मिस्टर भी आल्सो नॉन लीनियर हला कि बेसी नॉन लीनियर कोठी हला ना थर्मिस्टर नॉन लीनियर हला कि थर्मोकपलटा किछिटा लीनियर हला किछिटा नॉन लीनियर हला सो बट आरटीडी हमर लीनियर बॉडी काम कला हला सो दिस इज माय असाइनमेंट ओके थैंक यू